you have some knowledge regarding this thing, I'm just taking an example, not that I'm hinting at anything, but there is a VPN that you can use, and even if you're doing it from anywhere in the country, you can make it look like you're taking it from any other country. So at my level, I can't comment on it. There has to be thorough investigation made on this. Once we get an investigative report done on that, then we can comment on it. So no file is that tenure. The second act that you mentioned, it is applicable only when the aircraft is grounded. No, in flight it is already taken care of. But when it is grounded also or at the airport, then also we want this act to prevail on that. So that is why we are bringing in the amendment. And sir, in terms of revenue loss, has the airline shared any number? Suppose 10 flights so far they have received any such security threats. So in terms of revenue loss, any number that they might have shared? Not really, but they are telling us the inconvenience that the airlines are facing. One is you're talking about a financial loss, but it's more like an inconvenience for all the people at the airport operator and the airlines combinedly. And I feel the airlines also on one point, even if there is a certain inconvenience, they also understand the whole atmosphere that has been created now. So they are also supporting. And they are actually cooperating in terms of how do we come up with a better process to address this issue. So it is, they are also partnering up with us to enhance the whole process. Sir, a connected question. We are at the peak of festive season. Do you think these hoax calls have put some dent on the air traffic? Surprisingly, they are all going full. सर ये जो लो फ्लाई लिस्ट का टेन्योर होगा ये लाइफ टाइम का बैन है या 5 साल के लिए, पहला पॉइंट ये। दूसरा, आपको पता है सिक फॉर जस्टिस ने फ्रेश थ्रेट दिया है एयर इंडिया को, तो क्या एडिशनल सिक्योरिटी कवर एयर इंडिया को आप देंगे या किस तरीके से वो चीज है? तो ये नो फ्लाई लिस्ट का जो है अभी तो फिलहाल वो अमेंडमेंट लेके आएंगे, तो उसके ऊपर हमें करने का एक अधिकार जो मिलेगा, उसके बाद वो टाइम लिमिट का फिर से एक बार डिस्कस करके करेंगे। दूसरा जो एयर इंडिया का सिक्योरिटी कवर फ्रेश थ्रेट मिले हैं सर सिक फॉर जस्टिस की तरफ से। नवंबर में बोला गया है कि लोग अवॉइड करें एयर इंडिया ट्रेवल करने के लिए। ये सिमिलर थ्रेट लास्ट ईयर भी नवंबर को ही दिया गया था, तो क्या एडिशनल सिक्योरिटी कवर एयर इंडिया की पर्टिकुलर कुछ फ्लाइट्स No, see, we don't look at one airline as specific. Any airline, any kind of threat is a threat for us. So that is why I'm saying that at the airports itself, we have increased the surveillance and increased this thing. So we want every air travel, every airline to be safe. It shouldn't be targeted on any one airline, and if it is happening, it is not right. But from our side, we are ensuring that we make the entire air travel process. We are not particularly looking at let's make this more safer than that. For us, all airlines are our partners, and we want to ensure that across the spectrum, every airline is safe to travel. So ground level, whatever needs to be done, we are enhancing, and we are taking in. And if you look at some of the threats also, they are widely dispersed. All airlines have been targeted. It can't say that only one this thing is there. So we are combinedly working with all airlines also, taking their suggestions in there. It might take some time to happen. But by the time, is there an end to these hoax calls or they will continue? No, by the time we are following the existing process also of registering the cases and ensuring that the investigation gets done fast. So enhancing that process by taking all the law enforcement agencies also into consideration, we are pushing them to get them done as soon as possible. And in fact, Home Affairs has also been very, very helpful in this. From their side, they are continuously monitoring. So that is the additional benefit that we have to take. पैसेंजर ही नहीं है जो नो फ्लाई लिस्ट में तो उसे डाल देंगे, मानो कोई शरारत कर रहा है हमने पकड़ लिया, लेकिन अगर बाहर से कोई कर रहा है वो एयर पैसेंजर नहीं है, उसका क्या करेंगे? वो भाई हर बार इस तरीके का VPN यूज करते हैं। No, then we will see internationally also what needs to be done. You are talking about if people are doing it outside the country. From outside the country. If it is outside the country, no. If he is not flying, it shows outside. No, that is what the IT wing or the necessary intelligence people, they have to catch the person ultimately. They have to use the whole intelligence, this thing to catch it. So that is why we are taking their support. अभी तो कुछ ऐसा कॉन्क्रीट मिला है कि कोई जानबूझ के कर रहा है या कुछ इस तरीके? एक तो वो मुंबई पुलिस ने जो पकड़ा था, that was a very prank this thing. He had some issue with another friend of his, तो उसके लिए इसने कर दिया था। तो वो है अभी केसेस इन्वेस्टिगेशन में। सर ये जो अनलॉफुल एक्ट जो आपने सेपरेशन ऑफ अनलॉफुल एक्ट का कहता है अमेंडमेंट, इसमें क्या मेजर पार्ट आप लोग लाने की कोशिश करें, थोड़ा बताएं। इसमें मेजरली जो है ये ऑफेंस जो है वो इन फ्लाइट वाले उस सिचुएशन को ध्यान में रखते हुए उसमें सारे ऑफेंसेस का लिस्ट किया गया।
तो हम उसमें ऐड करेंगे जो ऑन ग्राउंड या फिर एयरपोर्ट के पास भी जो फ्लाइट हैं उसके ऊपर भी ऐसे थ्रेट्स आते हैं, तो उसको भी कैसे डील करना है, कॉग्निजेबल कैसे बनाना है, उसको हम स्पेसिफिकली ऐड करेंगे। तो इन फ्लाइट था, अभी ऑन ग्राउंड को भी ऐड करेंगे। ट्रेड कॉल्स के साथ साथ एयर पैसेंजर्स की एक बड़ी प्रॉब्लम रेस है कि फेस्टिव सीजन में जो एयर फेयर बहुत बढ़ जाते हैं। नहीं, उसका आप देखिए, उसका बहुत कम हो गया अभी। वो पहले ही जिस दिन मैं मंत्री बना था उसके बाद ये पार्लियामेंट में इसी का चर्चा बहुत ज़्यादा हुई थी, तो हमने एयरलाइंस को बुलाया, उनको सेंसिटिवाइज किया कि बार बार ऐसा इशू हो रहा है, तो इस बार ना आने के जो भी आपको उसके ऊपर कदम लेने पड़ेंगे उसको लीजिए। तो दे हैव डन इट एंड वी हैवंट रिसीव्ड एनी कंप्लेंट्स रिगार्डिंग दैट। स्पेशली आप देखिए, एक दिन में आप जब भी लेते हो तो उसके हिसाब से एयर ट्रैवल एयर फेयर का एक सिस्टम रहता है, डायनेमिक एयर फेयर सिस्टम, वो मार्केट के ऊपर एक दिन का भी देखोगे वो डिमांड के हिसाब से वो होता है, जैसे जैसे डिमांड बढ़ता जाएगा उसका। तो आर सोल्यूशन हैज बीन टू वे, वन इज सेंसिटिवाइजिंग द एयरलाइंस पीपल ऑल्सो टू बी प्रोएक्टिवली डीलिंग विद दिस सिचुएशन। एज वी आर गेटिंग मोर प्लेन्स, ज़्यादा प्लेन्स अभी आते हैं, ज़्यादा प्लेन उस रूट में ट्रैवल करेंगे तो डेफिनेटली डिमांड के हिसाब से सप्लाई भी बढ़ेगा, तो प्राइस कम होगा। तो दोनों तरफ से हम उसको एड्रेस कर रहे हैं। सर बिहार में जैसे छठ पूजा आमतौर पे देखा जाता है कि हाँ, वो स्पेसिफिकली, बिल्कुल बहुत ज्यादा किराया हो जाता है। हाँ, तो वो होता है एक स्पेसिफिक सिचुएशन एक आ जाए या स्पेसिफिक ओकेजन कुछ आ जाए, वो डिमांड के हिसाब से जैसे जैसे डिमांड बढ़ेगा वो फॉर्मूला के हिसाब से वो प्राइस बढ़ते जाएंगे। बट अदरवाइज इफ इट इज नॉर्मल तौर पे सारे अफोर्डेबल प्राइसेस ही हैं। सर एक सवाल उड़ान को लेके है, जैसे दरभंगा पे बड़ी वैसेट है, लेकिन दरभंगा के लोग का जो दिल्ली से या जहाँ से भी ट्रैवल करते हैं उनका ये कहना है कि जिस तरीके से डिमांड है उस तरीके से एयरक्राफ्ट नहीं बढ़ रही। सेकंड इज हिंडन एयरपोर्ट का है तो वहाँ पर नहीं चल पा रहा है, उसका क्या रीजन है? क्या हिंडन में आगे फिर दरभंगा में ये भी कहना है कि एयरफेयर ज्यादा है जबकि उड़ान में कम होना चाहिए, बेगूसराय से भी डिमांड आ रही है कि वहाँ भी उड़ान में करें, तो इसको लेके क्या है? दरभंगा एक बहुत बड़ा सक्सेस स्टोरी है और जिस तरह से वहाँ डिमांड बढ़ा है वो काफ़ी अप्रिशिएट करने वाला है कि वहाँ पे इतना डिमांड था, उसके हिसाब से हमने एयरपोर्ट बनाए। अभी 70 फ्लाइट तक वहाँ से शुरू हो गए। तो Well, that's the Civil Aviation Minister there addressing a press conference on the host of recent hoax bomb calls, bomb threats that we've seen to multiple airlines and flights. The minister saying that he is taking this entire issue very seriously, and those who are found to be responsible for these bomb hoaxes will be put on no-fly lists, and there will be other action taken against them. That's all the time we have on the show. Thanks so much for watching. Do stay tuned to News9 Live for the latest news updates. Who am I? Nobody can crack that mystery. There is a certain expectation of me. That's the only contradiction. Life itself is stranger than fiction. I was a perfectly normal person born in an abnormal world. I really didn't